बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हमारा शो। आपकी कोर टीम आपके साथ हाजिर, जिसमें शामिल सईद, उस्मान, अहमद, बुशरा, इकबाल, हुसैन और उमैर खान। और आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम के हवाले से गेस्ट भी मौजूद है, जिनका इंट्रो कराएंगे आपको बहुत जल्द। लेकिन हाल हवाल के लिए ले चलते हैं आपको इस्लामाबाद, जो कि काफ़ी गहमा गहमी हो रही है। बड़े वाक़यात और क्या नाम के सिनेरियोज वहाँ पर हुए पॉलिटिकल उसके हवाले से। सो जान लेते हैं बुशरा से कि सड़कें सड़कें खुली हैं या क्या सिचुएशन है जी वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सियासत छोड़ दी है। मैं सियासत से दूर हूँ और मैंने सोचा है कि मैं किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल नहीं करूँगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के हालात काफ़ी ड्रामाई से हैं और सड़कें शुक्र अल्लाह का कल से खुल गई थी। परसों काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, लोगों को काफ़ी वापसी में मसाइल हुए और दुआ यही है कि कुछ सोल्यूशन निकल आए। और अमेरिका जो है वो इस बारे में क्या कर रहा है ये जानेंगे उमैर से। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। अमेरिका जो है ना इस वक्त बाकी चीज़ों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अमेरिका अब से 6 घंटे पहले तक सिर्फ अमेरिका की नज़रें जो मरकूज़ थी ना वो मेलबर्न के मौसम पर थी। तो अब जो है वो सिचुएशन ज़रा जो मतला सिर्फ अबर आलूद रह गया है, बारिश के चांस नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि बारिश सिर्फ मैदान में होगी या होपफुली हमारी उम्मीदों पर, हमारी उमंगों पर, हमारे ख्वाबों पर नहीं होंगी। तो इस वक्त डैलस का तो ये सीन है और इस शो के बाद इंशाल्लाह चाय का सीन ऑन होगा। बाकी जो सीन है वो फिर चलते रहेंगे जिस तरह अगले 3-4 घंटे गुजरेंगे। तो देखते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा अपना। यार वैसे कुछ भी हो, ये ना हो कि अब मैच के बाद ये कह रहे हो कि मारो मुझे मारो। सो इसके अलावा जो है ना, सब बाकी सब कुछ अलाउड है। बुशरा को शायद समझ नहीं है कि आप बात क्या करें। सो आज वो तमाम लोग जो कि क्रिकेट देखते हैं उनका मालूम होगा कि आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है T20 वर्ल्ड कप में, जो कि हमारे वक्त के मुताबिक तो 4 बजे होगा। आई थिंक पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन दोपहर के 1 बजे। यस। ये सो बात ना मुझे लड़कों की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारे साथ इतनी खूबसूरत एक मेहमान मौजूद हैं और इन्हें क्रिकेट की पड़ी हुई है। उस्मान, हमें ये बताइए आज हमारे शो में इतनी प्यारी सी पर्सनालिटी कौन है? एब्सोल्युटली सी। सो जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक में देखा कि आज हमने बात करनी है सोशल मीडिया के हवाले से, तो हमने सोचा कि आज के टॉपिक के हवाले से एक गेस्ट को भी इनवाइट किया जाए। वेरी थैंकफुल कि अफीफा आदिल है, हमें ज्वाइन इन किया है। शी इज बेसिकली स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम यूट्यूब और उसके बाद फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। स्टार्टेड ऑफ विद मेकअप ट्यूटोरियल्स और रिसेंटली जो उनका लास्ट वीडियो आया था, आई थिंक उनके किचन रेनोवेशन के ऊपर था। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर अफीफा आदिल को सर्च कर सकते हैं। और आज हम लोग अफीफा से बेसिकली बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, यूथ के ऊपर जो उसका इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से। और अगर आप भी सोशल मीडिया की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या रोड ब्लॉक्स हैं और किस तरह से आप लोग एंटर हो सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ हमारा शो, मैं वेलकम करना चाहूंगा अफीफा को टू द शो एंड थैंक यू फॉर Thank you. ज्वाइनिंग इन। Thank you. The pleasure is all mine. Thank you so much for the invitation. It's always nice to talk about these topics, especially when it's pertaining to you. मुझे social media वैसे भी, I'm a big fan of it, and मैं काम भी काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। तो जब भी ऐसी discussions आती हैं, अच्छा लगता है जब मैं औरों से, आप अपने views exchange करते हो, because बहुत लोगों के different, point of views हैं social media से related. So it's always nice to sit down and, talk about it. Excellent. So, thank you for having me. Once again, welcome to the show. और straight away चलते हैं उमैर की जानिब। I think the floor is open and we can start off with our discussion, क्योंकि आज हमारे पास राइट अप कोई नहीं है और मैंने कोई पैकेज भी जो तैयार नहीं किया मैच की गहमा गहमी के चक्कर में। सो मेरे ख्याल में अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। ओवर टू मेरे खान। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे, ऑफ द एयर बात कर रहे थे, तो बात हो रही थी कि फलाने प्लेटफॉर्म्स मैंने शुरू किया, फिर आई मूव्ड इनटू दिस वन। तो जो रीच है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की, सबसे तेज़ जो रिस्पांस टाइम है वो किस प्लेटफॉर्म का आता है? ये सवाल इसलिए मेरे जहन में क्योंकि ये बड़ा एक जो होता है ना हुक वाला सवाल है कि Yes. यार मैं जल्दी जल्दी कैसे मेरे फॉलोअर भी हों, जल्दी जल्दी मुझे कहाँ पे रिस्पांस मिले। तो इससे ज़रा शुरू करते हैं, फिर आगे कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। It's a very good question, and इसका जो आंसर है थोड़ा सा I will try not to confuse you guys. लेकिन I think there's a different factors involved. आपका सबसे पहले तो content आप कैसा बना रहे हो,
समटाइम्स आप लोग कहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी इज द की. कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, आपने अपलोड करना है कॉन्स्टेंटली. आपने दिन में 2-3 बार आपने अपलोड करनी है वीडियोस या जैसे भी करनी है. बट समटाइम्स आपका कंटेंट ऐसा होता ही नहीं है कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को. समटाइम्स इट जस्ट डजंट हैपन फॉर यू. तो वो जो ओवरनाइट सक्सेस है या वो वायरल जाने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है और जो एवरीवन इज ट्राइंग सो हार्ड टू डू दैट दीस डेज, वो हर दफा नहीं हो पाता. अब जो सोशल मीडिया वैसे एप्स की बात है, उसमें एल्गोरिदम्स कीप चेंजिंग टू फॉर दीज एप्स. इंस्टाग्राम का जब स्टार्ट में जब बहुत ज़्यादा बूम आया था, उस वक्त एल्गोरिदम डिफरेंट था. उस वक्त लोग ज़्यादा उनकी रीच होती थी. यू वुड पोस्ट सम कंटेंट, आपको अच्छे लाइक्स मिलते थे, आपका एकदम से वो मेन होम पेज पे आपका वो चला जाता था कंटेंट, एंड आपको और फॉलोअर्स मिलते थे. लाइक ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी. आजकल इंस्टाग्राम से वो चीज़ नहीं मिल रही है, एंड देयर इज़ अ फ्यू रीजंस फॉर दैट. बट आजकल जो ऐप जो बहुत ज़्यादा आई थिंक अभी, although look at a saturation point पे already है, but the one app that you can count on is TikTok. And I know it sounds really low because people think that TikTok is a place where others are just dancing around or lip syncing chal rahi hai, ya, ek, because har kisam ka wo hai, but Yeah. there's something about TikTok's algorithm that's so different and that's so unique because it targets the audience exactly where they should be targeted. Location, उनका likes, I know Facebook भी करता है, Instagram भी करता है, but TikTok has really, कहते हैं ना, mastered that algorithm. So अभी तो it's going really good. But होता ये है कि कोई भी app हो, eventually they start, वो कहते हैं ना, greediness आ जाती है because everyone wants to make money. So Instagram was once, they were doing more stuff for the creators ताकि creators grow करें. अब उनको पैसे बनाने का, so they're trying to make it into a shopping app where the brands are, advertising their stuff more and more. So they're catering to more of those brands' needs than the creators. So I mean, things keep changing as well. आज ये है, कल सुबह मैं उठूंगी, कोई नया algorithm होगा. But you have to keep up with all of that. So I think consistency is the key, and also how useful your content is and how you're connecting to your audience. That's the number one thing. It's the content cannot be about you all the time. It has to be something that connects you to the audience. अगर आप इतना और किसी दुनिया में रह रहे हैं और ऑडियंस सिर्फ आपको देख रही है, तब तो फिर आप टीवी खोल के कोई चैनल पे कोई शो देख लो. The thing with social media is it's the connection between you and your followers. So that's important. Once you connect, that's when you grow. सही. ये बुशरा. जी, मुझे ना अभी जो अफीफा ने बात की उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पता चली वो ये है कि अफीफा ने वो बात कही जो कि स्टूडियो के पीछे की बात है, जो मार्केटिंग की बात है, जो हमसे कोई नहीं करता, हमें कोई नहीं बताता, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारे लोग तो स्क्रीन देख रहे हैं और एल्गोरिथम या टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये वो हैं. तो क्या वायरल कंटेंट जो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं उसके अंदर भी कहीं कोई पीछे ये प्लान होता है कि अच्छा लगता तो ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है लेकिन किसी ने ये प्लान करके बनाया है, या कोई भी चीज़ कहीं भी वायरल हो जाती है, क्लिक हो जाती है? वायरल डिपेंड करता है किस लेवल का वायरल है. अगर आप वो पार्टी हो रही वाली जो क्या नाम है उनका, दनानी, आई एम सॉरी, सच अ प्रीटी गर्ल, ब्यूटीफुल नेम, मुझसे कभी भी प्रोनाउंस सही नहीं होता, बट समथिंग लाइक दैट, व्हेन इट गोज वायरल, दैट्स प्योर लक. बिकॉज आई मीन, लुक एट दैट क्लिप. It doesn't provide anything to you, nothing. Right. It's just थोड़ी देर की entertainment है, या आपको funny सा कोई joke सा लगा. Sometimes those things get viral and it's pure luck. एक ने, and होता ये कि algorithms क्या देखते हैं कि आप जो पहले कुछ लोगों ने वो चीज़ view की है उनको कितनी पसंद आई है. So once the algorithm sees के audience को पसंद आ रही है, it's gonna start showing it to, bigger audiences. वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्प्रेड आउट करेगा. सो समटाइम्स इट्स जस्ट प्योर लक. एंड आई थिंक होता ये, समटाइम्स पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट वायरल एंड दे आर डूइंग दीज थिंग्स, लेकिन आपको पता लग जाता है थिंग्स दैट कम नेचुरली एंड दैट डोंट कम नेचुरली, आपको थोड़ा सा उसका फ़र्क भी पता लग जाता है. पर आई मीन, एक और चीज़ ये भी है कि यूजफुल चीज़ें भी वायरल होती हैं, मे बी नॉट एज मच एज जब वो स्पाइसी चीज़ें होती हैं. या आपको देखें ना, आप अगर आप इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप देख लें, टिकटॉक देख लें, जहाँ पे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कोई कर रहा है, वो लोग ज़्यादा सुनते हैं. पीपल, जैसे हमारा पहले, बैक इन द ओल्डन डेज, वो शाम के अखबार होता था, क्या उसको, टैबलॉइड्स वगैरह पे, जो तो दे गेट मोर पॉपुलर ऑब्वियसली. आप जब भी सेलिब्रिटी न्यूज़ देख लें, that's gonna reach more audience because people wanna,
kill time or just watch more entertainment. So it's a mix of different things, but that doesn't mean कि जो अच्छा content बना रहे हैं they don't. The goal is not to go viral. That's the thing, because viral होने में ये है कि let's say अगर आपका niche fashion है, आप बहुत viral हो भी जाओ, आपने target तो fashion, जो आपके fashion में interested लोग हैं उनको करना है. True. तो बाकी जो लोग हैं वो तो आपको सिर्फ देखने आएंगे. They might not be interested in your fashion content. So sometimes going viral is not exactly, I mean, beneficial, but it differs so much. There's so many, क्या कहते हैं उसमें चीजें इसमें involved हैं. Right. It's a long discussion. Right. Go on. आपने बात की वायरल होने के हवाले से, तो ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि बहुत सारी जो यूथ है उसने सोशल मीडिया की तरफ अपना इंटरेस्ट शो किया एंड केम अप विद यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड एज यू मेंशन टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक बहुत छोटी सी वीडियो है और चांसेस है कि उसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी. तो वो लोग जो कि इनिशियली या अभी सोच रहे हैं शायद आना सोशल मीडिया की तरफ एज अ फीमेल इन्फ्लुएंसर, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी उन खवातीन को जो कि शायद थोड़ा सा परेशान है कि यार पता नहीं हम जाएंगे, हमारी वीडियो तो लोग देखेंगे तो हम तो शायद जाकर बाजार में जाके शॉपिंग नहीं कर सकेंगे या बार्गेनिंग नहीं कर सकेंगे, समथिंग अलोंग दोज लाइंस. When you started off on YouTube and then later on Insta, mashallah abhi Pakistan se bhi hokar aayi hain, we were looking at your stories. So do you see ke people look at you differently social media pe aane se pehle ya uske baad in terms of connecting with you? Yeah, है तो सही. देखें, अगर आप let's say कोई छोटे से सर्कल में भी अगर आप मूव अराउंड करते हैं और वहाँ पे आप लोगों को जानते हैं, इट्स नेचुरल जब आप बाहर जाओगे तो वो आपसे मिलेंगे. अब मेरी ऑडियंस जो है ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस, जो हमारे देसी क्राउड है वो दिखता है, वेदर देयर इन नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में है, यूके में है या पाकिस्तान में है. तो अब बात यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में ज़्यादा डेंस हैं बिकॉज देयर्स मोर पाकिस्तानीज देयर. तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि मैं कहीं जाऊँ तो कोई someone's gonna walk up to me and say hello, and it's always nice to meet people and sometimes it feels good too, but at the same time a lot of times people, so मैं पाकिस्तान से होके आई, it was so nice and so respectful of them. A lot of times they would message me, and there were times I would be at a restaurant, they'd message me कि we see you at a different table but we're not approaching because you're with your family, we don't want to disturb you. और मैं उस वक्त नहीं देखती थी, मैं बाद में जाके DM कहीं भी मुझे एक आध दिन बाद नजर आता था. तो ये सब होता है. But I think the one thing that people especially, I think it's more for the influencers, I think what they miss, the point they're missing is आपका जो ग्रोथ है या फॉलोइंग है, that doesn't make you into a celebrity. See, आप एक काम कर रहे हो, it's your job, and I know actors, actresses वो भी जॉब करें, सब करें, but the difference is आपके followers don't treat them like your fans. Treat them like your family, like your friends, because at the end of the day, they are making you what you are, and at the same time, the connection is the key. आप अगर कोई let's say that here's the difference, आप अगर कोई मूवी देखते हैं, अगर कोई actor actress है, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. You watch them and that's it, and you have that fandom going on. So the problem is कि when that number जो followers का है, when that gets to your head and you start treating your audience like your fans, I think that's where the problem comes. I'm really against that. I always feel like कि ये मेरी फैमिली या मेरे इंस्टा फैम कहती हूँ मैं उन्हें, या मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, because they'll DM me about things. Sometimes there's too many DMs, I can't respond to every single one of them, but a lot of times I try my best to answer with their questions. उनको कोई किसी चीज से related कुछ सवाल करना है या कुछ करना है, तो I try to help them out, and sometimes I get help from them too. It's not like it's a one-way channel. Sometimes I learn from my followers too, so that's a huge difference. असल में ना इसमें जो अफीफा की बात से मैं इसलिए एग्री कर रही हूँ कि एक्टर के बारे में हमें मालूम है, वो सेलिब्रिटी है, वो एक्टर है, वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है जो उसको दिया गया है. दैट्स नॉट हिज और हर पर्सनल लाइफ. वो उनकी असल शख्सियत तो नहीं है. इन्फ्लुएंसर के बारे में ये है कि इट्स व्हाट दे आर. असल में उनकी असल वाली पर्सनैलिटी है जिसके साथ लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. लेकिन इन्फ्लुएंस करना माइंड्स को इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम. हाउ यू फील इट?
I do feel that I have that responsibility. For example, कभी कोई ऐसी situation आती है, I feel like अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप awareness पैदा कर सकते हो. Now, the problem comes when the audience doesn't realize that there's certain things आपकी boundaries होती हैं. For example, if you're following someone, you have no right to question their religion. Some things are just personal. And the judgment that comes from your following is unnecessary, and I think that doesn't belong there. For example, आप इतने लोगों को, अब बात ये है कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया ऑन अ वेरी, कहते हैं ना, टाइट उसमें कनेक्ट कर दिया. अब बात ये है कि if I'm living my life a certain way, I'm not going to change because my followers want me to change it. I am who I am. And if you're not agreeing with my lifestyle, and if that's the reason you're following me, then I'm not the person you should be following. There's a lot of people out there that you could be following जो आपके बिल्कुल perfection के उसमें उतरता है. मैं हमेशा अपने followers को कहती हूँ कि if you're looking for perfection, don't come on my social media, because I'm not perfect. I'm human. मुझसे mistakes भी होती हैं, वो भी होता है. And, you know, अगर आपने religious उस path को follow करना है, या you know, a certain routines या discipline, don't think कि वो आपको मिलेगा. And sometimes there's questions where DMs में आते हैं. I try to politely answer them, but then there's sometimes really angry people. And I find it really weird that how my way of life would affect someone on the internet. Maybe that person is like living across the world from me that much. But I guess ये चलता है, cultural differences भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो it's part of it. But influencer, sorry, I think I didn't answer your question properly. For example, you know, things happen. अभी flood का हुआ था. आप contribute करते हो जितना आप afford कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो help. But I think it's so much important for people to realize, influencers to realize कि उनका एक बार mention कर देने से कोई चीज़ कितने लोगों को affect कर सकता है. So मेरे ख्याल में अभी करीब में जो ये सारा हुआ flood का सारा, तो उसमें एक जो चीज़ I noticed was कि I'm not judging anyone. I'm sure there's plenty of people out there that did way more than anyone. Lekin I think there was much more awareness needed and much more work to be done by the influencers. आप पूरा अपना life गुजारो, किसी की life नहीं रुक रही है, किसी का काम नहीं रुक रहा है. But make sure कि once in a while remind people कि हम लोग तो अपनी life में move on कर रहे हैं, but that situation is still there. The flood victims are still sitting there waiting for help to come. So, I mean, these kind of responsibilities, I do agree with, कि आपका influence जो है आप पे, वो responsibility आप पे आती है. But other than that, religious and all those things, I don't think I'm responsible for people's decisions when it comes to that. अच्छा, बढ़िया, ज़बरदस्त आपने बात की पर्सनल जो बाउंड्रीज की. अब एक बहुत ही इंट्रोवर्ट जो शख्स है और वो कहती है कि यार मैंने भी अफीफा की तरह जो है ना यार इतने फॉलोअर्स करने हैं, या मेरे पास ये एक स्किल है जो मैं खुद ही घर के अंदर ही मैं पेरेंट्स वगैरह को, भाई बहनों को दिखाता रहता हूँ. तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट, क्या वो चीज़ें हैं कि जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, टेक्निक्स या स्किल्स टू गेट बियॉन्ड दैट पॉइंट? वो कहते हैं ना, आपके जो एक हेजिटेशन की जो बाउंड्री है उसको पार करने के लिए, specifically being an introvert? First, you have to find your passion. You can't just come online and, I mean, you can do that. There's a lot of vloggers out there, and they're, you know, posting about their daily life and stuff. You have to just start somewhere. There's always a first time for everything. पर आपका वो passion होना ज़रूरी है. जब आप passionate होते हो, तब आप हर चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हो. आप उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो. आपने इंट्रोवर्ट की बात की. I'm not an introvert. I'm a very social person, but I do have a lot of anxiety when it comes to social, and which seems, I know a lot of people don't believe that, but coming online was not easy for me. It was something that इस पे मुझे काफ़ी सुननी पड़ेगी, but I got, you know, I had to really hide this from, when I started my YouTube channel, no one knew. और मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे लगा कि oh my god, अब सब देख लेंगे. You know, for the first time you post your video, you think, oh my god, पता नहीं कितने लोग देख लेंगे, and hardly 2-3 views होते हैं या कुछ होता है. That's mostly the case. लेकिन yeah, I never told my friends and family. No one knew.
एंड मैं कितनी वीडियोस अपलोड की, बहुत, आई थिंक इट वाज 2-3 months into it when I finally made a Facebook page and posted about it. And my friends were shocked. Wait a second, what are you up to? कब से कर रही हो? क्या कर रही हो? I mean, इतना नहीं था obviously viewership वगैरह जो कि उनको पता लगता, लेकिन a lot of girls, especially हमारा, I mean, cultural difference या हमारे जो South Asian वहाँ पे पाकिस्तान से जो लड़कियां हैं, a lot of times they have to really block people from their social media so that initial आपकी जो hesitation होती है, जब तक आपकी एक तो आप already hesitate कर रहे हो, and then there's all this family and social pressures coming towards you, judgment coming towards you, कि ये क्या कर रही हो, you know, what do you think of yourself, what are you doing online? So sometimes you really have to be a little selfish and just focus on yourself, on your work, and when you think you're comfortable enough, then start exposing it to the near जो आपके करीब के networks होते हैं उसमें. That's what I did. Okay. और एक और अब मैंने सवाल पूछ ही लिया, तो एक और फॉलोअप भी मैं पूछ लूँ कि अब कोई भी जो नया शख्स या भाई साहब और या बहन आ रहे हैं, अब किस तरह मैनेज करें वो जो एक बैलेंस होता है वायरल होने में और सक्सेसफुल होने में? It's a good question, और मैं इस तरह इसको आंसर करूंगी कि आजकल if you have a company, let's say आप अपने आप को समझे कि आप कोई बिजनेस रन करें, आपका कोई स्टोर है, कोई स्टोर या कोई कोई किसी तरह का भी बिजनेस हो, you'd be surprised the type of businesses that are online now, जिनके Facebook pages हैं या social media उनके accounts हैं. If you don't have a social media presence, you're not going to succeed most of the time. There's so much competition in the market for every single thing. It's so interesting. TikTok पे या even Instagram पे मैंने farms देखे हैं जिन्होंने अपने pages बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपने accounts बनाए हुए हैं. Farms. Like वो eggs बेच रहे हैं या वो chicken और वो like imagine that. But there was this one जो कि they got so successful. I wish I had followed them. वो मैंने उनकी एक video देखी थी. It was going viral on TikTok and they were thanking people, or there was like hundreds of thousands of views on it. और बात ये कि if you have a business, you have to have a social media presence. Otherwise, you're not going anywhere. Right. It's key. It's necessary. It's important. People expect you to have a social media presence because आपके reviews होते हैं. For example, आप कहीं जाना होता है, आपने कहीं पे कोई भी सर्विस लेनी होती है, आप Google reviews check करते हो. That's also social media. Like you're, leaving reviews and stuff, and Instagram पे check करते हो. तो अब viral जाने की जो बात है, अगर आप सोशल मीडिया पे इस इंटेंशन से कंटेंट पोस्ट करोगे कि आपने वायरल जाना है, आप कभी वायरल नहीं जाओगे. दैट्स द की. मैंने जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह मैं कर रही थी, और द वन थिंग, 2-3 जो यूट्यूबर्स थे जो सजेशंस दे रहे थे आपको, समझाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब. द वन थिंग दैट क्लिक्ड वाज एवरीवन सेड never start YouTube to gain following. Start it for your own self. If you enjoy making the videos, if you enjoy doing the content, आप उसको करते रहोगे. अगर आपने ये सोच के कि आपने वायरल जाना है और आपने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया कंटेंट, you won't last more than 2-3 months. आप कहोगे यार ये क्या है, हार्डली 10 व्यूज हैं, 50 व्यूज हैं, 100 व्यूज हैं, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर आप ऑफलाइन हो जाओगे. सो अगर आप अपने लिए करोगे, आप करते रहोगे. और अगर माइंडसेट ये है कि अब मैंने फॉलोअर्स बनाने हैं, वो बनाना है, यू डोंट गो एनीवेयर. बट दैट डज नॉट मीन कि आपने करना नहीं है. एग्रेसिवली आपने थोड़ा सा इवेंचुअली अप्रोच करना होता है, बट नॉट द वेरी फर्स्ट डे. आपने you need to enjoy working, and that applies to everything you do. If you don't enjoy your work, you won't get anywhere. You won't succeed. कोई ऑफिस जॉब देख लें, कुछ देख लें. If you're not enjoying your job, you'll stay where you are. Right. अच्छा, इसमें तो इंटरेस्टिंगली मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हमारे शो में हम यही कर रहे हैं कि हम सिर्फ आपस में एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये शो करना बहुत अच्छा लगता है. और हम कितने अब इट्स नाउ बीन 2 years ऑलमोस्ट, और Yeah. हम बहुत मजे कर रहे हैं. और हमें बहुत लोगों ने कहा कि आप लोग जो थोड़ा सा ये कर लें, इसके अंदर थोड़ा सा यूं डाल दें, म्यूजिक डाल दें, आप ऐसी कोई वाइब्रेंट चीज डालें, आप वायरल हो जाए. तो हमने कहा भाई हम वायरल होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम Yeah. बहुत सीरियस टॉक करते हैं, और हम चीज़ों को जो है हम मज़ा भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जोक्स भी कर लेते हैं, बट वी डू नॉट टॉक समथिंग जो कि हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं जाती है.
बिल्कुल और हम बिल्कुल उसको हम चाहते हैं कि हम कुछ इंटरवीन करें सोसाइटी में, तो दैट्स हमारा शो, दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे। और माशाल्लाह आप अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ हमें बता रही हैं चीज़ें। मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और सपोर्ट सिस्टम कहाँ कहाँ पर है, स्पेशली बीइंग अ वुमन? yeah it also differs from where you belong to. If you're a Pakistani woman, things are very different for us. और साउथ एशियन अब देख लें जो भी वहाँ पे उसमें है, because I think there are families who support, but I was not one of them, and there's plenty of girls out there that didn't get the same support. तो हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हमने अपना कंटेंट बनाना है और उस पर फोकस करना है और उसको वो करना है, शार्पन करना है। हमारा वो भी होता है साथ में, वो पीछे से जो एक प्रेशर आ रहा होता है कि ओ माय गॉड व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू डूइंग, हर वीडियो के बाद एक कॉल आ जाएगी। समटाइम्स इट्स लाइक even now, like अभी पिछले एक साल में ऐसा कितनी बार हुआ है कि my mom, like someone would call her up and say कि is she okay, she seems quite sad these days, खुश तो है अपने घर में। और मेरी अम्मी मुझे कहती है फीफा तुम क्या पोस्ट करती रहती हो, like why are people saying this about you? मैं कहती हूँ I don't know अम्मी, like मैं see I consider my followers, sometimes you vent, sometimes you share things, you can't be happy all the time. True. There are days you can have bad days, you can have good days, and you need someone to listen to you, and there's a lot of listeners online जो follow कर रहे हैं, तो I share with them. But I mean, then among those I'm pretty sure there's a lot of people जो कि वो BBC बुलेटिन उनका ना आगे चल जाता है, फिर वहां से मुझे कॉल आ जाती है अपनी फैमिली से। So ये चीजें जो हैं, तो फिर what happens is जब next time आप पोस्ट करते हो आप कॉन्शियस होते हो, यार अब मैं ये बात करने जा रही हूँ, मेरा सेकंड, लेट मी जस्ट स्टॉप देयर, बिकॉज ये बात मेरी फैमिली तक पहुंचेगी, या ये मेरी फ्रेंड तक पहुंचेगी, या ये मेरे किसी एक्स कोलीग तक पहुंचेगी। सो वो जो चीजें होती हैं वो अगर आप उन चेन्स को अगर आप ब्रेक कर सकते हैं किसी तरीके से अपने माइंड से, अपने उससे, और या आप डर जाए कि नहीं यार आई एम नॉट गोना केयर कि लोग क्या कहते हैं या बाकी क्या कहते हैं, तो तब आपका सक्सेस है, तब आप ग्रोथ भी इजी है, एंड then you really enjoy it. So sometimes ये obstacles आते हैं being a woman, and then obviously you know how it is, you're online too, I'm online, so there's always those things where you got to make sure about safety. अभी recent में मैं पाकिस्तान जब गई थी तो मेरा ये है कि I always try not to post in real time, especially when I was in Pakistan. मुझे मुस्तकिल ये था कि if I'm at a restaurant, I would take pictures of my food, myself, उसका review करना है या जो भी करना है, but I wouldn't post it when I'm there. I'd wait till I get home and then I post it, because I don't want कोई भी अगर who knows life में आपके कोई आपको follow कर रहा हो, talk कर रहा हो, anyone, any intention. तो वो चीज मैं कर रही थी, and that's for safety, and I feel like not just women, I think even men should do that for their own safety. But I mentioned something like that online, and someone messaged me, who do you think you are, Queen Elizabeth? Like, oh my god, I can't even look out for myself, like I'm just trying to be safe here, and I posted that only because I was saying sorry, I'm not posting in real time, और होता ये था मैं घर पहुंचती थी तो I would already there was so much happening, कभी कोई guests आ रहे होते थे मिलने, या तो मैं post नहीं कर पाती थी. Right. So, yeah, I mean, but these are the things as women especially we need to be doing, and we do. थोड़ा सा वो उसमें रुकावट बनती है, इसलिए हमारा काम कभी कभार थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है because of these reasons. अच्छा, बुशरा ने बात की सपोर्ट सिस्टम की, सो घर के बारे में बताएं। माशाल्लाह यू हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स, एंड ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को भी हम लोग कभी-कभी देखते रहते हैं, नॉट ऑफन, Oh my God, he's so लेकिन घर के बारे में बताएं। हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड होम, और क्या सिस्टम है उन लोगों के लिए भी, उन खवातीन के लिए भी जो कि एज आई सेड एंटर होना चाहती है, बट देन अगेन उनको घर का भी ध्यान रखना है, और वो जो आप बात करिए ना लोग क्या कहेंगे वाला जो सीन है वो भी है, तो इफ यू कैन एनलाइटन ऑन दैट प्लीज। यस डेफिनेटली मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, वो उनको लगता है कि मॉमीज मॉमी आर यू गोना पोस्ट सम वीडियो टुडे, लाइक वो करते रहते हैं, उनको नजर आता है, बट आई ट्राई टू नॉट फॉर एग्जांपल इट्स अ सीरियस कंटेंट, मैं कहती हूँ नहीं तुम लोगों का हो ना, let me do this here. Yeah. But
with us mothers, I think hota ye hai mere saath, especially this past 1 year, because I was moving. We moved from Toronto to Texas, and um, priority is always the kids. And if my work is affecting them somehow, unke koi test hai ya kuch hai, I do put a stop to it. Nice. And I mean, I feel like that comes first, always. So ye cheez hai. My husband, he's in IT, but he is the last person you'll see online. He's like not on, and he's one of those people jo Reddit pe honge. He's more on these other apps jo IT guys LinkedIn, right. more into. They're like not into Facebook at all, and he's not. And sometimes when मैं वही बातें complain भी करती हूँ, मैं कहती हूँ, you don't watch my stuff, you never watch my stuff. So he's not really interested in that, but he supports me so much. I feel like if it wasn't for him, I wouldn't be here. And I'm not just saying it because वो कहते हैं ना कि जैसे अपने husband को या अपने spouse को तारीफ करनी है. He actually encouraged me. And मुझे याद है जब first time, it's funny because हुआ ये था YouTube का, जब मैंने सोचा भी नहीं था. And we were talking, we were just chatting, और उन दिनों मैं 2-3 YouTubers को follow along करती थी, मुझे उनका content बहुत पसंद था. तो मैंने and I was feeling very down and dull because बच्चे बहुत छोटे थे and I had a lot of work. They were like twins, दोनों साल का difference था. तो I was really exhausted and I felt like I had lost my own identity. Like if you're introducing yourself to someone, what do you say? You say, okay, I'm a mom. And what else? You have to have something for you. कुछ कहो कि मैं ये हूँ, या previously when I was working in a bank, I would say, okay, I'm a manager, या जो भी. So I missed that, and I was sitting and I said, oh, I wish I could just have my own YouTube channel. And I just said it out loud, out of no intention of having a YouTube channel, literally. And my husband was there. Well, why can't you? Why don't you think about it then? Nice. It was his idea. So I'm now, if he complains about something, I'm like, that was your idea. So, but he did encourage me. वो एक होता है ना कि आपको लगता है जैसे आपको there's a lot of things they're gonna pull you back from what you're doing. Yeah. It was different for me. My husband has always encouraged me to do whatever I want to do, and he feels proud of myself, of me. I mean, that I've been able to grow this much online. So, lekin ye again wahi baat hai, he doesn't really watch my content much. He has his own stuff going on. Lekin the encouragement is always there. That's good to know. You That's a Bushra. blessing. That's a blessing. Why makeup, Afifa? Because makeup तो बहुत सारे हैं ना, हर जगह का, हर कंट्री का, हर कॉन्टिनेंट का, I would say कि अलग एक जॉनरा है. और let's not talk to the boys, but let's talk among the girls. हमारे यहाँ मेकअप जो है वो बड़े कुछ अलग-अलग किस्म. They need to hear that. Because they were talking about cricket and तो हमने कोई बोला था कुछ, तो मुझे, और फिर खास तौर पर जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं, जो कुछ अवेलेबल है, जो अच्छे जो ट्यूटोरियल्स कर रहे होते हैं लोग, वो जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं वो तो यहाँ है ही नहीं, और अगर हैं तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो इन सारे चैलेंजेस के बावजूद you chose makeup. Why? So that was something I always enjoyed doing. Again, back to the same thing. You have to do what you're enjoying. And that was something I always liked to, dress up, do my makeup and stuff. But I didn't start YouTube with the intention of sharing makeup tutorials only. I don't know how that happened. मैंने एक वीडियो की मैंने enjoy किया, दूसरे की, बल्कि the first video that I did was a review of one of my handbags that I bought. अब मैं पुरानी videos देखती हूँ, they're super cringy. I don't watch them and I'm like, what was I thinking? ये मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन मेकअप का जो आप बात कर रही हैं वो आप गलत नहीं कर रही हैं कि वहाँ पे तो वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है. तो जो अभी recent years में मैंने देखा है वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है. They have more stuff in Pakistan now that sometimes I don't know कि कोई launch हुआ है यहाँ पे product and they already have it, the girls there. So I mean they're very fast. Yeah. But with me, I always tried to include the stuff that was available in Pakistan. मुझे हमेशा होता था कि जो products available हैं, ड्रग स्टोर मेकअप स्पेशली जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो मैं जब पाकिस्तान में रहती थी और जो मैं यूज करती थी, I've always included that makeup in my tutorials. So I have, yes, there are tutorials where I've used high-end products,
but there are a lot of them जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि वो वाले यूज़ करूँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. So and I mean होता ये है कि आप एक बार एक चीज़ स्टार्ट करते हो, आप एंजॉय करते हो. I started doing makeup and then फैशन का कंटेंट थोड़ा पोस्ट ज़्यादा करना स्टार्ट किया. I also came towards Instagram. Or I know you see me posting about my house renovations and stuff. A lot of influencers are branching off now. A lot of influencers who are really उनकी टाइट नीश था जो कि मेकअप का है या फैशन का है, कोई ऑटोमोबाइल पे लगे हुए हैं या जो भी, they are all branching off because they've realized कि आप एक चीज पे नहीं रह सकते हो. You have to, if you want to really succeed and attract more business towards you, you know, brand wise and everything, आपने थोड़ा सा ज्यादा cater करना है. तो वो concept अब आहिस्ता आहिस्ता change भी हो रहा है. एक और चीज ये है कि with life, when changes happen and you know you cannot do just one content. अभी last year में मेरे लिए makeup tutorials करना easy नहीं था. Setup नहीं है. कनाडा में मेरा एक room dedicated था for my YouTube stuff. पूरा studio मैंने बनाया हुआ था. यहाँ पे मेरे पास वो सब नहीं था, so I wasn't able to do it. लेकिन I had so much more other stuff going on at home, like renovations and stuff, and people are so much more interested in that. Right. So I started posting more about that. So, I mean, you can switch up, you can change it up. You can आजकल तो especially every influencer you'll see कि वो they're posting about just about everything. एक और बात ये आपकी जो following होती है, they're more interested in also knowing what you're up to. I get way more engagement on my stories जो day to day मेरी activities हैं than I would on my makeup tutorials. So people want to follow you, know what you're up to, आप दिन में क्या कर रहे हो. I know it sounds really कि पता नहीं कोई फारिग है जो ये देखता है, but really they want to know what you're eating. And you know, and I want to know sometimes कि कोई you know ये क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो I mean ये चलता रहता है. It's like a reality show for some people कि वो they're following along to see what you're doing. So yeah, I'm branching off. I'm doing more stuff, house related, other things, health related, and skincare related. So, I mean, I'm not limiting myself to one thing. Excellent. I know Umayr has a question. लेकिन मेरे पास एक follow question था, बुशरा के question से related है. मेकअप से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम टेलीविज़न पर भी देखते हैं और फिर अक्सर देखते हैं चीज़ें कि ये जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के बड़ी बात होती है. अगेन मुझे समझ नहीं आती कि एक तो ये क्यों दिखाते हैं लोगों को, और आपको क्या लगता है कि इससे जो ख़वातीन है, जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है या इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट? एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स उमैर. I've spoken about this a lot online too, and the reason, especially मैंने I think सबसे ज़्यादा ये चीज़ feel तब की थी when I had my own daughter. And मैं जब पाकिस्तान गई मुझे याद है कि people are more concerned about the complexion. Baby आपके गोद में बच्चा है, they want to see कि उसका complexion क्या है. Isn't that messed up? कि आपकी society which is supposed to cherish कि एक newborn है, उनको सबसे पहले ये होता है कि गोरा रंग है कि क्या है, और ये चीज ना एक मेंटल इशू बनती जा रही है. हम ये समझते हैं कि टाइम के साथ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, पीपल आर गोइंग पास्ट दैट. द रियलिटी इज व्हाट आई एम सीइंग ऑनलाइन मोर एंड मोर, गर्ल्स आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद इट. और हमारी जगह वहां पे जो है, because of online social media पे जो information उनको मिलती है, they are able to access these really bad treatments and creams for their skin, जो कि अल्लाह जानता है इन लोगों को जो ये बैठे हैं, especially मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे तो even doctors भी अब चीज़ें आराम से recommend कर देते हैं इस तरह की, and there's no check and balance on that. A lot of groups on Facebook or online में Instagram वगैरह पे भी देखती हूँ, there's discussions sometimes. People are openly suggesting these creams and other treatments that are, I don't know what they're doing to these girls' bodies. Young लड़कियाँ अंदर आपके organs को क्या कर रहे हैं, and vitamin C drips or injections और वो बाज़-औक़ात आपको skin light मुझे नहीं मालूम what they're doing. I never heard of it when I was in Pakistan. I never heard of them in Pakistan. When I came here, when I started my social media, that's when I realized कि पाकिस्तान में कोई injections मिलना शुरू हो गए, और वो ये नहीं है कि डॉक्टर के ऑफिस पे हैं, they're at the salons. Wow. How dangerous is that?
Wow. सो ऑब्सेशन ज़्यादा हो रही है। हम ये समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया से अवेयरनेस हो गई है एंड गर्ल्स आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम इट, बट द रियलिटी इज़ वो और ज़्यादा एक्सेसिबल हो रही हैं चीज़ें, और ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रही है गलत इन्फॉर्मेशन। एंड आई एम ऑलवेज रियली अगेंस्ट दिस। आई थिंक it's such a big issue and a lot of times people don't consider it that वो कहते हैं कि यार क्यों यहाँ पे भी तो लोग टैनिंग करते हैं। they're not realizing कि वहाँ पे हमारे social जो pressures हैं लड़कियों पे वो क्या हैं, related to them getting married and because arranged marriages हैं या जो भी हैं, already इतने problems हैं और आप लड़कियों पे उनकी skin color का भी वो डाल दो। But it needs to be addressed on a bigger level. We need to call out the celebrities who are endorsing these big brand creams. अब कर रहे हैं a lot of these whitening creams, वो नए उन्होंने जो whitening का नाम था, term था, वो अपनी creams के नाम से निकाल दिया and now they've named them differently ताकि वो पता ना लगे। सबको पता है whitening cream है, but नाम उन्होंने change कर दिया। So they need to be called out. The government needs to do something. It's a bigger issue. Everyone needs to take responsibility, and especially the influencers. I really hope they're mere close circle mein to, thank God I haven't seen anyone do that. But yeah, I've seen online anonymous posts वगैरह में a lot of girls suggesting each other what to use and what not. It's very dangerous. Right. या हुकूमत हमारी के वैसे ही बेचारों के बड़े और झंझट हैं, वो बिजी रहते हैं, उन्हें टेंशन और बड़ी है। तो जब जरा सीरियस टेंशनों से उनकी जान छूटेगी तो फिर शायद इधर आए। मेरा क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं पर्सनल स्किल सेट की, दैट हेल्प्स यू इन सोशल मीडिया लाइफ। आपकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइफ है, उससे आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कोई ऐसी चीज सीखी हो कि यार वाकई यार ये मुझे पहले नहीं पता थी, बीइंग ए सोशल मीडिया प्रेजेंस, you've learned something कि जो आप अप्लाई कर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? जो अभी रिसेंट में जो चीज़ मैं बहुत फोकस कर रही हूँ वो मेडिटेशन है। आई नो इट साउंड्स वेरी फैंसी, ऐसा लगता है जैसे वो बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड का टर्म साउंड करता है, बट it's something actually my father used to really believe in as well, and now that I'm following some of these influencers and जो meditation को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, and I'm reading more and more about it, that's something I've incorporated. Another thing is I know ये चीज़ तो discipline and routines आपको बचपन से सिखाई जाती हैं, but somewhere along the वो आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हो। आपका जब आपकी वो आते हैं ना, जब आपके पेरेंट्स आप अपने घर से अपने घर में जाते हो तो आप अपनी ज़रा सी मनमानी करते हो, ज़रा सा अपना आज़ादी इंजॉय करते हो। तो आई फील लाइक मैं ज़्यादा इनकरेज होती हूँ रूटीन्स को फॉलो करने में, which sounds really crazy because social media is supposed to be a waste of time. That's what people say. But I feel like I learn a lot from. But here's the thing that is very, very important. It's important to look at your list of the people you're following. अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं टुवर्ड्स गुड थिंग्स, तो अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स या वो, लेकिन आपकी अपनी वेल बीइंग, हेल्थ, आपकी अपनी रूटीन्स या आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप अच्छा चीजें सीखोगे, वो करोगे। सो इट्स एंड once in a while it's good to go through the list and see कि आपने कोई इधर उधर वैसे तो फॉलो नहीं कर रहे हो आप for entertainment sake या spicy news सुनने के लिए आप किसी को फॉलो ना कर रहे हो। But yeah, I've learned a great deal of stuff from a lot of influencers too, routines and things, small little tiny things that make a huge difference in your life. True. Afifa, one last question और फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आज सोशल मीडिया खत्म हो जाता है, what's the future? I don't know. I don't see a future without social media. Not as in business-wise, but I don't know. People are gonna be lost. हमारे तो हर चीज. See, here's the thing. Everything is at the click of a button. Like you're literally dependent on social media for everything now. आपको कैसे पता लगेगा मैं इस रेस्टोरेंट पे खाऊं या ना खाऊं? You gotta make sure अच्छा रेस्टोरेंट है, आपके पैसे, वरना आपको you don't want to waste your time and money. A lot of things like day to day में we don't realize how much हमारा social media हमारे
लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर चुका है, और I don't know, it's gonna be like a, वो कहते हैं ना end of times हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, you know, it's gonna be one of those things. I hope not, but I hope it never happens. But All right, let me just Rephrase. or add something in the question. How you see your future with social media? 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? social media is gonna stay whatever I'm doing, and I do have some ideas, some dreams that I want to follow. I'm not going to say them out loud right now, but yeah, there are things that I want to do, exciting things. I just need to take the first step. And I'm really hopeful that social media is going to help me achieve them. Because hota ye, aap social media pe presence aapki hai, eventually you got to make sure that you use it to, I mean, not just to have a following, or yeah, आपका वो कहते हैं ना एक salaried income. You want to make sure that you do something for yourself. So I do want to have my own business, and I'm hoping social media is going to help me through that. Awesome. Excellent. Umayr, looking towards the closing, I guess. Anything you want to add? closing जी, मैंने तो जो चीज़ सीखी है, और इतने लोगों को जो मैं फॉलो भी करता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, अफीफा said the same thing, कि stick to what you really believe in, what you relate to, what you really feel you get connected to from the inside. क्योंकि जब आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे ना, कि जो वाकई में आपको पता है कि शीशे में खड़े शख्स में आपको नज़र आ रहा है, तो फिर उसी चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। और जो दूसरी बात बोली कि ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों तक तो वीडियो भी पहुंच जाएगी और पप्पा कुटनियों तक उसके कमेंट्स भी पहुंच जाएंगे, तो उसको इग्नोर करें, या स्क्रीनशॉट भी पहुंच जाएंगे, तो उसको इग्नोर करें, और जो शीशे में शख्स नज़र आ रहा है उसकी बात सुने, और फिर अल्लाह का नाम लेके लेट्स गो। Nice. और मैं वाइंड अप पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा अफीफा की बात सुनकर, क्योंकि मुझे लगा कि वो शख्सियात जो आपको सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं और वो खूबसूरत भी लग रही होती हैं, या वो कुछ ऐसा काम जो कि ज़ाहिर है कि हमें ऐसा लगता है कि वो लिटरेरी काम नहीं कर रही, कोई मतलब कोई मेकअप इज़ अ सीरियस बिजनेस, या लाइफस्टाइल बताना इज़ अ सीरियस बिजनेस, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि ये जो खूबसूरत ख़वातीन हैं ये बस यही कर रही होती हैं। तो इट्स नॉट दैट। अफीफ़ा के साथ बात करके, और मेरा ख़्याल है कि जो मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि ये शख्सियात सिर्फ स्क्रीन नहीं है, इनके अंदर डीप डाउन पूरी पर्सनैलिटीज़, इंडिविजुअल्स हैं, उनके ख्वाब हैं, उनके ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके फ़ियर्स हैं, उनके चैलेंजेस हैं, और उनकी स्पिरिट है जो उनको कीप गोइंग रखती है। So take your social media influencers as serious as you take any individual at any job. Thank you very much, Afifa, for being with us, और इतना अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो हम चाहते थे कि जिसके हवाले से बात हो और हम जान सकें। I'm glad to know कि मैंने किया है। मुझे यही फील होता है हर क्वेश्चन के बाद कि पता नहीं, I'm going off track, but it's so much fun to talk to you guys, and just knowing कि आप लोग understand कर रहे हैं जो मैं बात कर रही हूँ, because not everyone understands things. It's hard to because हमारी field ये है और लोगों को लगता है ये it's all fun and games, but thank you so much for understanding, and thank you for giving me the opportunity to explain myself. Excellent. Thank you very much once again, Afifa, on behalf of the entire team of Hamara Show, for joining us. और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और मैं भी आखिर में यही कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो कि सोशल मीडिया को शायद ज्वाइन इन करना चाहते हैं, जैसे कि अफीफा ने कहा कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हैव गेम प्लान इन माइंड। ये नहीं कि फलाने बंदे की वीडियोस पे 1 लाख व्यूज आते हैं तो मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरी वीडियो पे भी आ जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और दूसरी जो बात अफीफा ने की और बहुत अच्छी है कि डोंट कम or enter social media just for the sake of like, views and comments and things like that. अपना काम करते रहें, लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप ओरिजिनल रहेंगे, और यही आई थिंक सबसे बड़ी की है कि स्टे ओरिजिनल, स्टिक टू योर गेम प्लान एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू। ये था आज का हमारा शो, और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोग
अफीफ आदिल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर भी. No creeps, please. But then again, if you have any questions, do inbox her, and I'm sure she will reply. आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz. हाफिज़.